Namaskar. Good morning and very warm welcome to the first session of the day. I am Jayashri Sethi. साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 के आखिरी दिन ब्रह्मपुत्र सभागार में पहले सत्र का विषय है अनुदित कृतियों को पढ़ने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द ट्रांसलेटेड वर्क्स. This session is being chaired by Ms. Ratnottama Senagupta. I warmly welcome you on the stage. Please put your hands together as she graces the stage. While she does so, I would like to give a brief introduction. Ratnottama Senagupta is a national award winner for her writings on cinema. She has been with the Times of India, The Telegraph, Screen, and cinebengal.com. Besides writing extensively on cinema and art, she has contributed to Encyclopedia Britannica on Hindi films and has to her credit many titles, including on plastic arts. आप कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समितियों में रही हैं. आपने मुकुल नामक लघु फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है जो नबेंदु पर आधारित है. आपने एंड दे मेड क्लासिक्स के साथ निर्देशन की शुरुआत की है. मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन है. As we move forward, I would request all of you to please put your phones on silent mode or you can switch them off. अब मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद शाह जी को कि कृपया करके मंच पर आइएगा और आपका तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा. अरविंद शाह कुशल लेखक, कवि और अनुवादक हैं. आपकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुदित कविताओं का संग्रह, साथ ही कश्मीरी से अंग्रेजी में अनुदित कविताओं का संग्रह शामिल है. आपने 100 से अधिक लेख लिखे हैं जो लिटरेरी क्रिटेरियन और इंडियन लिटरेचर सहित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं. आप वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेषज्ञ समिति के सदस्य और शुहुल ताप पत्रिका की मुख्य संपादक हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. क्या मैं टेक टीम से आग्रह कर सकती हूँ कि वो इस एसी की आवाज को कम कर दें या एसी को बंद कर दें. Next, I would like to invite Shri Chandrasekhar Hota ji. Chandrasekhar ji, if you are among us. Okay, so once he's here, he'll join us on the panel. Next, I would like to invite Jeevan Rana ji. Jeevan Rana ji, kindly come on stage, and while he does so, please put your hands together. Jeevan Rana ji कवि, कथाकार, अनुवादक और संपादक हैं. आप नेपाली में लिखते हैं. आप साहित्य अकादमी के नेपाली परामर्श मंडल के सदस्य रह चुके हैं. आपकी 5 भाषाओं में 35 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें 23 पुस्तकें नेपाली में हैं. आप 2010 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है. तालियां नहीं बज रही हैं. मैं जानती हूँ कि सभागार में इस समय गिनती बहुत कम है और मुख्यतः हमारे पास स्पीकर्स, वक्ताज ही यहाँ मौजूद हैं, पर जितने लोग हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज वेलकम आवर स्पीकर्स ऑन स्टेज. थैंक यू सो मच मैम. अब मैं इनवाइट करूंगी श्री लेखुराम रामेश्वर सिंह जी को. कृपया करके मंच पे आइएगा और अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा. Lekhuram Rameshwar Singh Ji is an assistant professor in the Department of English at Nambol El Sanoi College in Manipur. His publications include the book, A Critical Assessment of the Poetry of K.K.N. Daruwala, and a translation of Sophocles' Oedipus Rex into Manipuri. In addition, he has published 5 papers in national and international journals. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी नीलम सरीन जी को. कृपया करके मंच पे आइएगा. आप लेखिका, अनुवादिका और संपादिका हैं. आप साहित्य अकादमी के डोगरी परामर्श मंडल की सदस्य हैं. आपकी 3 मौलिक पुस्तकें और 4 अनुवादित कृतियां हैं. इसके अलावा एक संपादित पुस्तक मोक्षदायिनी गुप्त गंगापुर मंडल उत्तर वाहिनी भी है.
आपकी रचनाएं डोगरी और हिंदी में कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैं। आपको जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत। अब मैं न्योता देती हूँ एस शेषारत्नम जी को। कृपया करके मंच पे आइएगा और इनका तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। एस शेषरत्नम एक प्रसिद्ध हिंदी आलोचक और अनुवादक हैं। आप आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें दिनकर की कविता में विचार तत्व, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समकालीन हिंदी दलित कविता, संवेदना एवं मूल्य दृष्टि शामिल है। आप साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार समेत कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। हार्दिक अभिनंदन। Now I would like to invite Shri Shantanu Gangopadhyay ji on stage. Please welcome him. He is a former assistant editor of Sahitya Akademi and newsreader of AIR Kolkata and Delhi. He has translated 7 books into Bengali, including co-translated works. आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं सुरजेर घोड़ा ओ अन्याय गल्प, माटीर गान, एनी फ्रैंके डायरी तथा दुदिया, तुम्हारा ज्वलन स्वदेशी। उम्मीद कर रही हूँ कि मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पहली भाषा नहीं है। आप वर्तमान में पुस्तक संपादन, अनुवाद, वाचन तथा नाटक आदि कार्यों में सक्रिय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब हमारा जो पैनल है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड एज वी ऑल सी वी हैव गॉट डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट एंड दे आर बिग इन नंबर्स, सो वी वुड वांट टू हियर ईच वन ऑफ यू एट लेंथ। और उसके लिए मेरी अपने अध्यक्ष से एक ये अनुरोध रहेगा कि इफ यू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, 1.5 घंटा इस सत्र की अवधि है, सो वी वुड लाइक टू फिनिश इट बाय 11:30। सो ओवर टू यू चेयर मैम। क्या आप इन्हें एक माइक दे पाएंगे वहां पर? हाँ, हमारे पास आगे की कुर्सियां खाली हैं, तो अगर हम इन्हें भर पाए तो अच्छा होगा। हमारा स्टाफ भी आगे आकर बैठ सकता है। यू वॉलंटियर्स आर अ बैकबोन। आ जाइए, आगे आ जाइए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मिस सेठी। Do we realize, we all do, but not we consciously सोचते नहीं है कि हम इंडिया में we are so privileged. All of us, we are constantly going from one language to another in our heads. दिमाग में हम कभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी तो कभी अपनी मातृभाषा, ये तो हम किस वक्त कहाँ से किस लैंग्वेज में जा रहे हैं ये हम कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं। तो वी आर प्रिविलेज्ड, we are privileged that there are so many recognized languages in our constitution. We are even more privileged that Sahitya Academy goes beyond the constitution and recognizes languages. तो इसीलिए should I continue in English and lapse into Hindi or the other way around? ज्यादा हिंदी में बोले या ज्यादा अंग्रेजी में? कुछ आवाज नहीं सुनाई पड़ी। I'll carry on the way I like it. So what happens is, without realizing, we are constantly from one language to another. But the importance of the formal way of approaching languages becomes very clear when we look backwards to our epics. मेरे बचपन में हमारे घर में सब बैठ के, my father had made a rule. My father was a very eminent writer, a Bengali writer who grew up in Patna, which had a lot of Hindi, even 100 years ago. So we had this custom, we used to sit around और कभी रामायण से
एक रामायण तुलसी रामायण खत्म हुआ तो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि सॉरी द अदर वे अराउंड, वाल्मीकि खत्म हुआ तो तुलसी, तुलसी खत्म हुआ तो काशीदासी इन बंगाली, एंड कभी बाइबल, कभी जातका टेल्स, कभी कथामृतो तो पढ़ते थे. We used to read, all the family members sitting together. So what did that do to me? It brought me alive to languages. And later, when I studied literature as a subject in the university, I realized that the Ramayanas are the first original written books in those languages. Many of these, Kashidashi Ramayan, for example, in Bengali. And why are they original? Because they not only tell the story, they sort of recreate it and place it with the ethos and the values of the society in which they are growing up. The same goes for our Tulsidas Ramayana. It is more bhakti. In Bengali Ramayana, it was more, the more the uh, Pachali tradition, where a lot of the society is reflected in that also. So anyway, it went on like that, and I realized that in Bengal there was a publisher called Dev Sahitya Kutir. They used to bring out translations of the books for young readers, and I grew up reading. I'll give you a couple of the names. I grew up reading Adventures of Tom Sawyer, on as well as Crime and Punishment. I read Bluebird as well as Shakespeare's Othello and some of these things as a child in translation, translated into Bengali. Later years, we've seen in recent years how Marquez and our Japanese writer and our African writers, Nobel winners, have come to us mostly through translations. So translation from beginning from with our childhood to our times. My father was a Bengali writer who went to Bombay and became a screenplay writer, very eminent. He's a legend. But he nursed one sorrow, in one sadness, that his colleagues didn't know what he was as a writer, because they only knew the films he had written for, and in films it is always the director who's more important. So people didn't know him. It's only after he passed away that I could bring out his writings in Hindi translation, and I'm doing that with English translations as well. Uh, that brings me to the fact that in today's world, and I'm not going to take a couple of minutes more. In today's world, when we were kids, when we used to go to watch Hollywood films, many of us used to joke, American films should have subtitles, because we were not so exposed to the dialect of even people, English speaking people. What to talk about Czechoslovakian, Russian, Japanese. In more recent time, Iran has emerged, China has emerged as major filmmaking centers. 60 years ago, Hollywood dominated, 70 years ago, or even further ahead. But in more recent times, it's cinema from Korea, cinema from, little pockets that were not so well known. And they have again come to us through subtitles. And today, channels like Netflix brings films to us with subtitles. That again is translation. So I'll stop there. My opening remarks, I'll stop there, but I will continue to ask all my distinguished panel friends, colleagues. We would not have claimed the first Nobel Prize
we as Asians would not have claimed the first Nobel Prize that came to Rabindranath had he not done the translations. So translations not only remains at that everyday बस में ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में जाते हुए, वहां भी चाहिए और नोबेल के लिए भी चाहिए. So with that, I'll ask, let me start with Arvindji. He mentioned that he has a prepared paper. So I'm not going to ask the question. I might ask the question later. Thank you, ma'am, and good morning, especially respected madam. My dear learned participants and dear audience. I would like to remind everybody that since we are a panel of 6, roughly 6 minutes each rakhte hain so that we have some time for. Okay, thank you, ma'am. Actually, I'm preparing about some 13 minutes. Let me shorten it as much as possible. Literature is a form of human expression through which words and sentences are used. Sorry, may I ask you to read the title? I mean, what is the focus of your? Okay, the topic is the importance of reading the translated works. I'm also referring some works related with our Manipuri translation. Literature is a form of human expression through which words and sentences are used in well-organized way. Many scholars and writers gave their own definition in order to defend the idea of literature in their perfect way. Through literature, we learn so many knowledge. One of the unneglected part of literature is translation. Even though it came later part, that is since the Saint Jerome translated Bible into Latin, which became the standard version of Bible for the Roman Catholic Church. Every year, September 30 is observed as International Translation Day in honor of Saint Jerome, who translated Bible. In a world as diverse as ours, where language can be a barrier, translation emerges as a vital bridge, facilitating understanding and communication among people of different languages. Culture established by the United Nations stands as a tribute to the remarkable contributions of translators and language specialists. There are approximately 3,000 to 4,000 written languages in the world, with some sources stating that around 3,661 languages are known to be written, while others estimate that around 7,000 spoken languages exist, with only a portion having established a writing system. The Constitution of India recognizes 22 languages as major literary languages, and these languages have a considerable amount of written material. But there are many more languages in India. Each of the language and custom have unique features. They have literature written in their own language. Some of them have been translated in other major languages like English, Hindi, Bengali, Marathi, Manipuri, Tamil, Gujarati, and so on. Those literature has been again shown to readers of other languages through translation. Therefore, translation takes a very important role in the society. Cultural exposure. While reading translated works or other literature, readers can gain insight into different societies, customs, traditions, cultures, and viewpoints that might not be readily available in their own language. Many famous works of literature, including world classics, have been translated in many regional languages. By reading all these literatures, readers themselves feel closer to other cultures and customs, and thereby bring sense of oneness among the different groups of people. Let me give an example from our Manipur context.
Many classics of the world have translated into Manipuri language, and people who can only read Manipuri can enjoy literature of the world through translation. It is the window through which many readers can see the outside world. One very interesting point is that the world classic Indian epic poem Mahabharata and Ramayana have been translated into Manipuri, and the whole story of both the epic poem has strongly stuck in the mind of the Manipuris. It becomes a part of our culture that even in religious ceremony or rituals, some episode of Ramayana and Mahabharata are presented through storytelling known as Wari Liba or Wari Lyric by some pandits or scholars in translated version. It accesses a wider variety of literary works beyond our native language, discovering a genre that might not be readily available in our literature or culture. By reading other literature that has translated to our mother tongue, readers are exposed to new vocabulary and linguistic styles, potentially enhancing our own language skills, especially when reading high-quality translations. It also develops empathy for people from different backgrounds by engaging with their stories and experiences through translated literature. I want to mention another great Bengali novelist, Sarat Chandra Chattopadhyay. His famous novel based on true love story of two lovers is still in our mind. The story of Devadas and Paru, love from their childhood, who are torn apart when Devadas is sent away to Calcutta for further study by his father. When Devadas returned to his village, all their relation has altered. The story has been translated into Manipuri and again recreated in different art forms like Sumang Lila. Sumang Lila is one of the most popular form of art form, which is played in the open field or courtyard. And in film, the story, the characters like Paru and Devadas, Chandramukhi are so popular and impressed in the mind of the local people. And they never thought of the story or characters that this is a translated work. Some modern translated works into Manipuri, which people found of very much were to mention are Adhi Adhure by Mohan Rakesh. The play is translated by R.K. Mobi Singh and won Sahitya Academy Translation Prize. The play translated into Manipuri as Mapung Pada, this is the translated version in Manipuri, is noteworthy for its depiction of middle-class family life and transient nature of familial relationship between husband and wife. This breaking down relationship among the spouse is very common in modern society and widespread everywhere. Another translated work of the same translator is The Dark Horse. One of the most popular novels of this decade written in Hindi is about the portrayal of the life of a candidate preparing for civil service examination in Hindi medium is one of the most influential books to youths. This novel depicts the uncommon urban life specifically in the backdrop of Mukherjee Nagar, Delhi. The Sahitya Academy Youth Award winner Nilotpal Mrinal gives a strong message to the aspirants of nation's highest civil service examination that those who are from economically weak can also succeed in life. Language and culture play a very important role in translation. In literature, translation depicts the culture of particular community that can exchange the value and belief of one society. The importance of culture helps to speak the belief and idea during a proper way, which may well be understood by people from different literary and cultural background. Study of the interpretation, culture, and language may be a vital component for us. The range of languages with different culture and necessity of communication in human life cause translation to be a really effective communication exchanges, culture, and May knowledge. I, yes, please, would you just convey the gist of what you are saying? Rather than read, because we have a paucity of time. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.
Let me come to the conclusion part. Globalization has enormous impact on our lives and culture. It has a very important impact on translators' lives and works. Translation is becoming a more and more important tool for understanding between culture in the context of globalized world. The translators from both the developed and developing countries find new challenges as well as opportunities. The book of Indian philosophy first to be translated into Russian was Bhagavad Gita in 1788. The study of language, culture, and translation and the relationship between them are crucial issues because of the importance of human communication in the world. Language and culture are closely related to each other. The variety of languages with different culture are necessity to communicate with human life, and it is possible through translation for communicating, exchanging culture and knowledge. It is through translation that the great collection of poems Gitanjali made available and let known to the whole world by Mahakavi Rabindranath Tagore himself by translating the poem from Bengali to English. Tagore himself by translating the poem, for which he was awarded the most prestigious award, the Nobel Prize in 1930. He was honored the first Asian to win the Nobel Prize. So as the time is given very short, I just want to conclude here. Thank you, madam. Thank you, Singh Saab. I hate to interrupt because everybody has worked hard and prepared papers. So, but all my panel members, can I just request all of you, because otherwise, we'll go on repeating what my friends have said. So I'm going to put down a few pointers, let us take the conversation through these avenues. Of course, you all have your own thoughts. If you can focus your thoughts and speak rather than read, because what happens is then it gets conveyed more easily. So as I was thinking, listening to Singh Ji, what does a translator achieve? Gets an empathy with the characters. They become more real to your lived context. In a democracy like ours, translations are very important because it gives us a glimpse into the lives of people who live in a totally different part. मणिपुर से जो आते हैं वो केरला के लोगों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो translator, when he reads, he goes through all these things. I'm saying these things कि आप अपने जब भी अपना when you place your presentations, थोड़ा इन सब aspects को अगर ध्यान में रखते हुए थोड़ा modulate कर ले, then translator gets an identity. Some people become known as translator of so and so. ये भी देखा गया है. Translation of text into film वो तो डायरेक्टर को एक नई पहचान दे देती है, पर किताबों में भी जब translation होकर आती है तो it gives a new identity. So how does that help? Does it give a purpose to the translator? And एक और aspect in today's world we have to keep in mind, how should a translator be compensated? उनको, should there be a fund they can tap into, because translation is a very serious and full-time thing which most people today cannot think of as a profession, because there is generally no money for translators when they start out. Or finally, translator की loyalty किसके प्रति होती है? To the writer or to the creation of the writer? To the characters and the situations, or to the language that the writer has used? Loyalty kiske prati? Who should we pay more attention to? With that, I'll ask, sorry, madam. Hello, madam. Ratnamji, we share our Ratna in our names. Would you like to sit and talk from here, or would you like to read?
But I'm going to again call you. Alert you. Calling you. You want to read, please come, but I'm going to alert you 6 मिनट के बाद, 8 मिनट से ज्यादा समय. मंच को सादर नमन और सामने बैठे हुए प्रबुद्ध साहित्यकार सभी को मेरा नमन. और वैसे ही यहाँ आपके सामने खड़े होकर 2 शब्द बोलने का जो अवसर मुझे साहित्य अकादमी ने प्रदान किया है, उसके लिए मैं साहित्य अकादमी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ. आज का विषय है अनुदित कृतियों को पढ़ने का महत्व. अनुदित कृतियों को पढ़ने का महत्व जो विषय है, इसके पहले भी अनुवाद के सत्र 2-3 रखे गए हैं और आज अनुदित कृतियों का अध्ययन करने का महत्व. यदि अध्ययन ही नहीं करते हैं तो अनुवाद का क्या उद्देश्य होता है, कैसे सफल होता है. अनुवाद का कार्य ही भावात्मक एकता को साधने के लिए और हमारे साहित्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, हमारे साहित्य को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए हम अनुवाद करते हैं. इसका मूल उद्देश्य वही है, क्योंकि वरना अनुवाद कला ही नहीं होती तो हमारे जो विचार है, संस्कृति है और जो स्वदेश्य होते हैं, ये सब हमारे सीमा तक ही रह जाते हैं. इसलिए यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम विश्व स्तर तक हमारी रचनाओं को या हमारे साहित्य को पहुँचाने के लिए, हमारी संस्कृति को भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अनुवाद भी हम करते हैं. ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है अनुवाद आज की कला नहीं है, बहुत पहले से, शुरुआत से आप ले ले तो अनुवाद सक्षम रूप से चलती आ रही है. लेकिन उसका सैद्धांतिक पक्ष आजकल लोग उसके सैद्धांतिक पक्ष पर सोचने लगे, उसके लिए अनेक सिद्धांत निकले हैं. लेकिन आप देखिए हमारे तेलुगु साहित्य को ही ले लीजिए, मैं तेलुगु भाषी हूँ. तेलुगु साहित्य को ही ले लीजिए. महाभारत जो संस्कृत में लिखा गया है, उसको 3 कवियों ने तेलुगु में अनुदित किया है. लेकिन हमारा जो महाभारत है आज नन्नय्य, तिक्कना और एर्राप्रगड़ के महाभारत है. संस्कृत का महाभारत को नहीं लेते हैं. माने बोधगम्य है, सभी को उनमें जो लिखा गया है हम समझा सकते हैं. इसलिए अब जो पढ़ते हैं, अध्ययन की महत्व के बारे में कहना है तो आज जो पढ़ते हैं संस्कृत में कितने लोग पढ़ सकते हैं. अनुवाद में जो किया गया है महाभारत, उसी को पढ़ करके समझ सकते हैं उसकी जो महत्ता है, उसमें जो मूल्य है और सामाजिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है, ये सभी हमें बोधगम्य होता है अनुवाद के माध्यम से. माने स्तरीय पुस्तक, इसे हम अनुवाद नहीं कहते हैं. तेलुगु महाभारत कहा माने नन्नय्य का नाम लेते हैं. वैसे ही पोतना जो महाभारत के प्रणेता है, वो पोतना का नाम लेते हैं, संस्कृत का नाम नहीं लेते हैं. इस तरह आज जो पहले से जो अनुदित हुए थे, उन्हें आज सारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ही लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे. ऐसी स्थिति में अनुवाद को दोहम दर्जे की कला मानना ठीक नहीं है. मेरे मंतव्य से लोग कहते हैं कि हमेशा मूल लेखक का नाम लेते हैं लेकिन अनुवादक का नाम नहीं लेते हैं. ये सही नहीं है. मूल लेखक जो है अपने मन में जो बात आती है उसे सही ढंग से आपके सामने या समाज के सामने या पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है. लेकिन अनुवादक ऐसी नहीं है. माने मूल लेखक की जो वेदना है, जो विचार है, जो भाव है,
उसे आकलन करके वो पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है और उस भाषा की संस्कृति, वो प्रादेशिक परिसर, वातावरण, इन सभी से परिचित, आचार विचार रीति रिवाज, इन सभी को जाने बिना मूल कृति का अनुवाद नहीं कर सकता, करने पर भी वो सफल नहीं होता है। इसलिए ऐसे रचनाकार आज जो विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व, क्योंकि आज वैश्वीकरण की दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसे वैश्वीकरण की दिशा में हम चल रहे हैं, हमारी भाषा को वहां तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए आज अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए अनुदित पुस्तकें जो होते हैं उन्हें पढ़ने से ही आप लोग हर एक प्रांत की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसे समझ सकते हैं और जातिगत विभेदों से, प्रांतगत विभेदों से हम मुक्त भी हो सकते हैं। एक राष्ट्रीयता, आत्मीयता और विश्व बंधुत्व की भावना को हम स्थापित कर सकते हैं। और 10 मिनट हो चुका है, मैं जरा याद दिला रही हूँ। दस मिनट हो गया। This is what I said. This is a very onerous task, but I have to keep reminding him. ठीक है। अनुवाद प्रत्येक भाषा की गरिमा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से परिचय की आवश्यकता को, अन्यथा आवश्यकता को समझाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अनुवाद के माध्यम से ही हम अपने विचार को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और अध्ययन की महत्ता के बारे में और एक बात कहूंगी। आज मैंने पुराने जमाने से, प्राचीन काल से जो आ रहे थे वो अनुदित हुए थे। आजकल जो हो रहे थे साहित्य ही नहीं, साहित्येतर अनुवाद भी हो रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया में हम चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम इन अनुदित ग्रंथों को या पारिभाषिक शब्दावली को जाने बिना अनुवाद भी नहीं कर सकते। और अनुवाद किए गए कृतियों में जो त्रुटियां हैं, जो अच्छाई है, भलाई है, कैसे उस प्रांत की संस्कृति को ला पाए हैं, इस प्रकार के विषयों को जानने के लिए पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। तभी तो हम हर एक प्रांत के संस्कृति से और वहाँ के रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। और वैसे क्योंकि समानार्थी, समान रूपी शब्द भी है हर एक भाषा की, और वैसे ही समान रूपी भिन्नार्थी शब्द है। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द को ले लूं, तेलुगु में उपन्यास माने भाषण है, वही हिंदी में उपन्यास माने नावल होता है। इसलिए ऐसे समान रूपी समानार्थी शब्द को और समान रूपी भिन्नार्थी शब्द को जाने बिना, पारिभाषिक शब्दों को जाने बिना हम अनुवाद भी, साहित्येतर अनुवाद या साहित्य का अनुवाद जो भी सोचिए, नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन शब्दों से, उन शब्दावलियों से परिचित होना, वहाँ की संस्कृति से परिचित होना और आकलन करना, रचनाकार के मूल रचनाकार को आकलन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं अनुवाद के लिए। समय सीमा को दृष्टि में रख करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी मंच का आदर करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी शांति से मेरी बात को सुने हैं। थैंक यू। Many thanks, Shri Ratnam ji. May I now request Rana ji to come to the podium if you would like to, or if you want to. आपको भी फिर याद दिला रही हूँ, समय सबके लिए निर्धारित किया है। 8 मिनट में अगर हो सके
Otherwise, I would request you to speak rather than read. Respected Chairman, Madam, respected participants, scholars and writers, all of you, good morning. I would like to give a presentation on the topic, the importance of reading the translation works. According to Jose Saramago, a celebrated author, writer builds national literature, whereas translators construct world literature. This highlights the significance of translation, making it the most crucial and magnificent task of all. The translated books introduce us to the thoughts, values, and the traditions of various cultures and countries. These books provide us with a new perspective on the world and broaden our thinking. The importance of cultural exchange. Cultural exchange is a process that enables people from different cultures to the interact, learn from each other, and appreciate each other's perspectives. This process provides us with the opportunity to learn about various cultures and understand our own culture better. The role of translation in cultural exchange, the translation plays a vital role in cultural exchange. Through translation, we can learn about various cultures, facilitating communication and understanding between people from different cultural background. Cultural exchange translation is essential. It provides us with the opportunity to learn about various cultures and understand our own culture better. Translation serves as a bridge between cultures, facilitating communication and understanding between people from different cultural backgrounds. The translated works provide us with the knowledge on various subjects. These books give us information on science, history, literature, and other subjects. This is creation our knowledge and enable us to understand the world better. Translation plays a vital role in the improving of language skills. Through translation, we can learn new languages, understanding their grammar, vocabulary, and pronunciation. Translation help us to strengthen our language skills, communication with others, and achieve our goals. Improving language skills through translation is an essential process. This process helps us to learn new languages, strengthen our social relationship, and advance our careers. Translated books introduce us to various literary styles and genres. These books tell us about the literature of other countries and help us to increase our literature understanding. This enables us to understand literature better and increase our literary appreciation. Translated books introduce us to various cultures, languages, and subjects. These books help us to increase our knowledge, literary understanding, and the importance of the translated books is immense, and we should be encouraged to
read these books. Uh, Translation plays a vital role in enhancing literary understanding. Through translation, we can become familiar with various literary styles. Uh, Translation help us to better comprehend literary works and understand their meanings and message applied to them to our lives. Enhancing literary understanding through translation is very important. This process help us. Uh, Translated works introduce us various cultures, languages, subject. These books help us increase our knowledge. Therefore, the importance of translated books is an immense, and we should be encouraged to read these translation works. The translation works, Sahitya Academy highly encourage to the translators to publish their books in their respective languages. We should appreciate the initiative taken by Sahitya Academy, New Delhi, is of his historic and significance. This is an important campaign. This thinking holds long-term significance. Thank you. Thank you, Ranaji. In such a short time, you've really given us the importance of translating into a language that is off the mainstream, that is less known, less heard. I will now come to Sarinji, and I would request her to share her experience, because धन्यवाद। Dogri again is a language which has been a bridge between धन्यवाद। जय माता दी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम मंच पर बैठे हुए हमें सब अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, तो ट्रांसलेशन की महत्ता हमें समझ में आ गई। अनुदित कृतियों को पढ़ने का मतलब दूसरी संस्कृतियों को समझना है और उनसे तालमेल, उनसे रूबरू होना है। हाँ जी, ठीक। विश्व का साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, मातृभाषाओं के साहित्य के विकास में सदा ही अनुवादक एवं पाठक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक भाषा भाषी समाजों को प्रेरित और पुनर्जीवित किया है। हम देखते हैं कि कुछ उत्कृष्ट अनुवाद तो मौलिक रचना का दर्जा पा जाते हैं और कहीं उससे भी बढ़कर हो जाते हैं। तो मैं अगर पाठक और अनुवाद की बात करूंगी तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, थोड़ा सा जनरल नहीं करके जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, खासतौर पर जम्मू डोगरा तथा डोगरी भाषा की। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू प्रांत में रहने वाले लोग साधारणतः डोगरा कहलाते हैं और कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी। डोगरी भाषा इनकी भिन्न भाषा है और इनकी सत्ता भी अलग है। डोगरी भाषा का जो वजूद है, हमें अमीर खुसरो जी की किताब 1319 में जो छपी थी, उसकी कविता में डोगरी भाषा का उल्लेख आता है। पर आम द्वारा डोगरी भाषा सिर्फ बोली जाती थी। डोगरी भाषा बोलने का डुग्गर क्षेत्र, हमारा डुग्गर क्षेत्र सारा है, और इससे पहले सीमाएं बहुत बड़ी थी। इसमें हिमाचल प्रदेश भी आता था, पाकिस्तान में जो इलाका चला गया है वो भी आता था। वो सारे इलाके में डोगरी ही बोली जाती थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि डोगरी के अलावा कोई भी भाषा वो लोग नहीं जानते थे। हिंदी और इंग्लिश को तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे। और पर ये सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि डोगरी भाषा में लिखते नहीं थे। साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, और अगर थोड़ा बहुत इतिहास अगर लिखा गया है तो वो उर्दू या फारसी में लिखा गया, डोगरी में नहीं लिखा गया। और सबसे बड़ी महत्ता तो मैं डोगरी वालों डोगरी डुग्गर प्रदेश में जानती हूँ कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने तो अनुवाद पढ़ के ही हम अपना साहित्य लिखा और इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा। तो 1930 से पहले हमें डोगरी की कोई भी किताब हमें नहीं मिलती डोगरी भाषा में। शायद इसको साहित्य लिखने के लायक नहीं समझा गया। राजे महाराजों ने इस पे बहुत अपनी लिपि पे उस पर थोड़ा सुधार किया, उसको थोड़ा सा ठीक किया, उसमें आधुनिकता लाई। पर फिर भी थोड़ा उन्होंने कहा कि जो डोगरी नहीं बोलेगा, डोगरी में एप्लीकेशन नहीं देगा, तो उसको जुर्माना दिया जाएगा।
फिर इस तरह के डोगरी में जो निज़म है उनको डोगरी में ट्रांसलेशन करवाया, और बहुत सारी किताबें रामायण महाभारत गीता को डोगरी भाषा में ट्रांसलेशन कराया। वो अनुवाद लोगों ने एक तरह से जो डोगरी भाषा डोगरे लोग हैं उनको एक पाठक मिले, उनको पढ़ने के लिए कुछ मिला डोगरी भाषा में। पर ज्यादा कविता कहानियां गीत कविता आदि गढ़े जाते थे लोगों द्वारा, आम लोगों को द्वारा गढ़े जाते थे, पर लिखे नहीं जाते थे, किताब रूप में हमारे सामने नहीं आते थे। वो सिर्फ कह सकते हैं कि वह सारा लोक प्रकाश किताब रूप में प्रकाशित नहीं होते थे, वह सारा साहित्य लोकगीत लोक कथा कारका बारह के रूप में लोक साहित्य में घुल-मिल जाता था। भारत की दूसरी मातृभाषाओं की तरह शिष्ट साहित्य के साथ साथ डोगरी लोक साहित्य भी समृद्ध होता गया। हमारे यहाँ लिखित साहित्य की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं है बेशक, पर इस धरती पर विद्वानों और चिंतकों की कमी कभी नहीं रही। उनका ही कमाल है कि हमारे पास लोक साहित्य का खजाना बिखरा पड़ा है, जिससे हम अपने अतीत की सामाजिक आर्थिक भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के पास हजारों शताब्दियों से उनकी जीवा पर धार्मिक सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों के संबंधों में लोक गाथाएं लोक वार्ताएं तथा जनश्रुतियां नाच रही हैं। माना जाता है कि इनका जन्म अपनी अपनी विशेष घटना के घटित होने पर ही हुआ होगा। डोगरी भाषा को लोक गाथाओं लोक गीतों कारकों दंत कथाओं तथा जनश्रुतियों के मूल में कई ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के अंश छिपे हुए हैं। आज भी किसी तरह की भी खोज पड़ताल अध्ययन अनुसंधान के संदर्भ में परंपरागत जनश्रुतियां लोक गाथाओं एवं लोक गीतों का सहारा लिए बिना शोध कार्य वहां अधूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां लिखा नहीं गया। तो जैसे हमारे बहुत सारे पांडव माना जाता है कि जम्मू कश्मीर जम्मू की पहाड़ियों में पांडव अज्ञातवास में वहां रहे थे, तो हमें पांडवों की बहुत सारी लोक गाथाएं मिलती हैं वहाँ। फिर उसके बाद गोरखनाथ जी आए, तो जिसका संबंध वैष्णो देवी से भी है, तो गोरखनाथ जी की गाथाएं हमें बेशुमार गाथाएं मिलती हैं, पर लिखित रूप में हमें कुछ नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ लोक नायक हुए हैं, बाबा जित्तो जी हुए हैं, तो बाबा जित्तो हमें वैसे तो हम सौभाग्यशाली हैं या फिर विडम्बना है हमारी कि उनके बारे में एक भी शब्द हमें लिखा नहीं मिलता। उन्होंने किसानों के लिए आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते वो आखिर में उनकी मौत हो गई। पर वो सारा कुछ उनका कब जन्म हुआ, कब मरे वो, कब उनके बीच में क्या क्या घटा, सब कुछ हमें लोक कारकों में ही मिलता है। हमें आज हमने जब किताबें प्रकाशित की हैं, तो सिर्फ उस लोक कारकों को आधार मानकर हमारी किताबें वहाँ प्रकाशित हुई हैं। तो अनवित, और मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ तो जो हमारे आज इतने अच्छे अच्छा लिख रहे हैं, जो उपन्यासकार हैं कहानीकार हैं नाटककार हैं और कविता लिखते हैं, वो सब लोगों का अगर वजूद अगर है और हम यहाँ बैठे हैं अगर, तो सब अनुवाद की ही वजह से, उसकी ही महत्ता की वजह से। और हम अनुवाद ही तो हमें दूसरी संस्कृतियों से रूबरू कराता है। अगर किसी ने जम्मू की पहाड़ियों को समझना है, जम्मू वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों को समझना है, वहाँ की जीवन शैली को समझना है, वहाँ के रहन सहन को समझना है, तो हमें बाकी प्रदेशों के लोगों को हमें अनुवाद ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं शायद ज्यादा ही बोल गई हूँ, तो उस अनुवाद की हमारी महत्ता को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो मैं समझूंगी कि हम अगर सभी प्रदेश अपने अपने अनुवादों को पढ़ें, और हम तो समझ ही रहे हैं। मैंने अभिजात्री उपन्यास एक किया था असम का, वो उपन्यास जब मैं सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उस उपन्यास को मैंने ट्रांसलेशन किया डोगरी में, और आज भी वो अपने वो एक चरित्र पे था, और उस उपन्यास में लेखिका ने शायद इतनी अच्छी तरह से एक चरित्र का निर्माण किया है। चंद्र प्रभा नाम की वो एक समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, और उनको शायद 1975 में उनको पद्मश्री भी मिला। और 1900 से लेकर उन्होंने अपनी सारी यात्रा को, जो उसकी यात्रा को साथ साथ उसके रहन सहन खान पीन जीवन शैली उसके पोशाक, वो सारा कुछ हम रूबरू हुए। और मेरी हमेशा इच्छा होती है जब भी मैं कभी महिलाओं में बोलती हूँ तो उस उपन्यास का उस कैरेक्टर का जिक्र करूँ। तो ये अनुवाद का ही तो है अद्भुत, हम अनुवाद को ही तो अद्भुत मानते हैं। अनुवाद से ही हम बाकी संस्कृति को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। आशीष धन्यवाद, थैंक यू सो मच सरीन जी। आपने सही में बहुत सुंदर ढंग से ये जो कनेक्टिविटी increases through translation, and translations establish that
humanity is one family, and like different members of the family are the different languages, and humanism is the one binding force. Translation establishes that. May I request अभी आप ही से अरविंद जी, आप अपना फोकस आप ठीक बना है। लीजिए and हाँ हाँ, नमस्कार मैडम सैन गुप्ता जी एंड एवरीबॉडी। आई एम सबको मेरा नमस्कार, खास तौर पर सुरभि सफरू को, शी हैज स्पेशली कम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ट्रांसलेशन वर्क। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा जो पहले ही बोली गई है ट्रांसलेशन के बारे में, तो मैं स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेचर के बारे में बात कर लूँगा, और उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया की ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री। सो आई विल स्किप ऑल माई पेजेस एंड आई विल डायरेक्टली कम टू ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री, क्योंकि ट्रांसलेशन पे बहुत बात हो रहे थे, हर कोई इसका जो बात कर रहे हैं वैल्यूबल बातें हैं। तो ट्रांसलेशन लिटरेचर का थोड़ा, आई कॉल इट classical translation, because when you translate a poem, there are so many disciplines of writing a poem, and then a translator has to be very sensitive to the disciplines of a poet, disciplines of the poem, and discipline of the subject. Only then he can translate a poem. I will directly read some points I have located. I have classified how poetry can be translated. I will skip everything. I will directly come to the points that I have highlighted how to translate a poem. First character of translating poem is to gather the sensitivity of the original. I will give illustrations for everything when I give an example. I will read a translation of Atal Bihari's poem, and all these translations are done by me. Whatever translations I read, I will read only the translation, not the original. I will read only just one paragraph. A new song do I sing, dipping stars burst a sipping song, stone chests sprout new hope strong, pale dress of plants is shed, cuckoo sings dark, night is no more to dread, I can see dawn brings luminosity to bring, a new song do I sing. Who is to heed to broken dreams, misery traversing the soul, I speak the agony, I will not give in to accept defeat, nor do I lay a quarreling creed, on the wheel of destiny, I rewrite a link, a new song do I sing. काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. This is famous, and how it has been translated is, no word is picked up directly from his, but still the essence is carried. That is why I say we have to gather this substance. On the wheel of destiny, I rewrite a link, a new song do I sing. Now, second point of translating poetry is that a poet is involved with the subject when he writes the poet, and the translator has to be involved with the subject. I again read a poem translated by me, Atal Bihari Vajpayee. What he writes: restless night to tease, dawn too brings no ease, dark black clouds hover, hopeful birds chirp no longer, body a burden, mind a load, arousing the pains old, all busy in selfhood remain, none to realize others' pain. The poet confined to jail days, pain is to part, he says, so live life all these things, except whatever he brings. This poem he has written when he was in jail during emergency. So there was a sentiment in this. He says the pain of a jail. I have tried to capture the involvement, what was the poet's involvement writing in the jail. I have tried to capture in the translation the same sentiment. So the involvement with the subject is very important once you are translating the poem. Third thing, capacity to go beyond the established rules. Once you are translating a poem, you have to go beyond the established rules, because language in poetry is not framed in the segments of rules, because like poetry has an idiom of its own. I again give an example. Vasudeva Kotam is an one, there are two syllables. That when we had G20 here, it was translated as one earth, one family, one future. So two words were translated into 6 words. What was the reason? Because we went beyond the limitation. Vasudeva Kutam is 2 words, but when it was translated as one earth, one family, one future. That means this message is carried independent of the words. We are not bound by any word.
what was the content, what was the message, that was carried out by a poet. So this is when a phrase or an idiom or a poet is to be translated. One has to go beyond. Now I'll read a lalwak. Most of you must be knowing the name of Lal Ded. Lal Ded is a poet of Kashmir. She was not known. Nobody had even written her. It was from oral tradition, from one mouth to another mouth. Grierson, one of the greatest linguists of the world, you may be knowing, he came to Kashmir. He collected all the lalwaks, translated them, and once he published them in England, lalwak in a short span of time became a universally known poet. So this is the power of translation. Now you go in any country, any language, Lal Ded is taught in universities. Lal Ded is so powerful, it is because of translation. Her lalwak is only 4 lines. I have translated it. I will not read the lalwak. Let me not waste the time. I have translated it. And there are 4 lines. I'll read the original also. Nabad Atbor. No, I skip it. I'll read the translation part of it. Sweet, you just gather the sense of the lalwak. Sweet life loads of possessions I held by hands with determinations. Heavy got the upload, loose got the handhold, the body frame got bent. Now, upright I cannot stand, but how? What to do, what to say, I do not know. The outway, I lost the word Guru had told, am now in deep agony myself to scold. Shattered, scattered, devastated, and unheard, I am a cattle herd without the shepherd. I am a cattle herd without the shepherd. This was the power of Lal Ded. This is all symbolic. If you read even my translation, every word has a connotation to the original. So now the third point of translating poetry is punctuation. Punctuation is a very important character of translation. Had you heard the previous poem, how I tried to put a pause, put a clause, that was just to tell you that here is a comma, here is a colon, here is a dash. So punctuation is very important character of poetry. Another translation creates commitment to the source. I'll read a poem. You have to be the intuition. Once you read a poem, you gather an intuition. The intuition, what must be the state of the mind of the poet when he has written this poet. There's a transcendental relationship between poet and the writer translator. If one is able to establish this transcendental relationship with the poet and his subject, then the translation will become apt. I'll read the translation of a Kashmiri poet. You just listen it. The broken piece of mirror haphazard shines bright on the heap of garbage. A cow walked by, came in, gazed and went past. A dog came in, breathed on it and went past. Now your attention. A discreet fool-like soul, draped in rags, strips whole and whole, took it up and fused on her strip, then extended the reach of her possession. By fusing that mirror on her straps, she extended the reach of her possession. What more can be said? A thought that is to be read. This was translation. Now another romantic poem. You see the romance. It's a long poem. I'll read the last paragraph only. Oh dear, be there, your steps I adore. Hold, just hold, oh dear, to hear me implore. There's a big poem of Mahjur. Mahjur is a great poet of Kashmir. I read the last paragraph only. Neeraj's translation. The closeness between original and the translation. Neeraj, you know, the Hindi poet, the big name. Sleep was yet to go. Sun came up to show. Feet were to tread yet. Life slipped to go spent. ये उनका एक बहुत मशहूर अभी पैर उठे नहीं थे. I read it. Sleep was yet to go. Go. Sun came up to show. Feet were to tread yet. Life slipped to go spent. Rahat Indori, you people must be knowing Rahat Indori. His famous couplet. I'll read the translation. Not by any associate, not by any friend or mate, the thorn in our foot will be out only by our effort. This is Rahat Indori's very famous couplet. I'm reading the translation because it's reading of the translations. No need to carry the whole things. Translation has its own dimensions. Sometimes you have to add a couplet, or sometimes so that the sentiment is carried. For instance, Shah Ramzan's famous poem on a mother,
I'll see, I have repeated the words, what we call anaphora. This is the technique of repeating the words. He had used the word mother only once, but I have repeated the word mother, and so that there's a feeling of mother is generated. I read the last paragraph of the poem. Last stanza rather. Oh mother, dear mother, you shall last long, long and long, all along, till air holds my breath. Your radiance sense in me, looks after me, keeps care and cheer for my being to be. This is a definition of her mother. Then sometimes words cannot be translated from one language into another language. There's a famous poem of Krishna Ju Razdan, Beltai Madal. The title is Bel Madal. This is the title of the poem. I have used the same words. And instead of written the note, the biological words, they are the name of the flowers, specific to Kashmir. I have only written their biological, botanical names at the end. So I use the same vocabulary. Bel, Madal, Vana, and Gulab in a bouquet, I offer to Paramashiva and pray. O Shiva, from your cascading hair flows the Ganga fair. Brahma, Vishnu, and all gods stand in your prayer. I bow in your devotion and pray. Bel, Madal, Vana, Gulab in a bouquet. I have not translated Brahma, Vishnu, and these. I have used the words as such. I have not translated the herbs and this, that. I have written that in footnotes. Yes, now another. A poem is not bound to have a standard expression and definition. I'll give a small example. An poshe teleri van poshe. इसका मतलब है जंगल जब रहेगा तभी भोजन रहेगा. There was a translation done by government to this: food is subservient to forests. When I came, they came to me, I changed the translation. I wrote, for foods to be, jungles should be. Instead of writing that food is subservient to forests, I did two translations and they gave it to them. And for foods to be, jungles should be. And another translation, foods will last when jungles will last. Then they changed the translation and used my translation, the literature they had published. Two more features of translating a poem. Number one, when you translate a religious text, you are not at liberty to do any change because the texts are so strict and defined. When I Maulul Shab, if some Urdu knowing person is there, there's a poem that's a religious poem, Maulul Shab, Special Night. I had translated it. It was Rahman Rahi who had translated it. But I had to change the text because he told you cannot fiddle with the original text. I will not read the poem, that's a long one. No. Now I'll read when a poem is quite flat. There you cannot disturb this. I read a poem that was written recently by our Prime Minister Narendra Modi ji, and I translated it the same way, flat, nothing, no thought. I read the translation of the poem and then I'll see it. तुम मुझको कब तक रोकोगे? This was a poem, most of you must have heard it. तुम मुझको कब तक रोकोगे? I will read the translation. How long you can create a hurdle? How long you can stop me and muffle my pissed soul dreams to fulfill? My pockets keep hopes full. Keep desire to do fulfilling deed. Keep desire to do something indeed. I know not to have the intensity of the sun, but find me burn like an oil lamp then, alight, light to radiate, lucence to create. I have not been the tree of the soil in care, irrigated by many a rich river. I am the produce of the barren terrain, suckling life from the lifeless grain. I am the inscription on the stone, not to fade away, but a definition of a tomb. How long in your try they can go to break me like a glass in a row? Din of humiliations, arrows of distractions cannot deter me to act. I am to say the truth direct. The universe does not keep so many miseries up the sleeve, which I cannot bear. So no giving, no surrender. I keep the depth more than the ocean. How many pebbles you can throw then will pick up and sideline each, find the way, the goal to reach. I have bent to stand upright to stand for the right. Now I do not mean to bend to meet and mean end. I, by desire, have come to face to face, you're no bit of secure, I need to care. Whenever, wherever you thrust me into heats, whatever will burn all impurities, only to hold and come up the pure gold.
This is me and my motherland where I stand. This is we and our motherland where we stand. How long can you create a hurdle? How long can you stop me and muffle? Last part is a translator of a poetry must be sensitive to the style of the poem. If a poem is written blank, you have to translate it in a blank. This is my personal view. I don't have. And translating a poem is not writing the purport or writing the meaning. So whenever I translate a poem, I translate it in the same form. If it is written in verse, I will translate it into verse. If it is written in blank, I will write it blank verse. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. You've enlightened us on several fronts. Most of all, I had in my mind translating poetry is so difficult. I mean, how can you translate emotions? How can you translate ideas and dreams, which is what poetry is? And when I was listening to you, I was also thinking, how do we translate songs? Again, there are ragas, there are notes, there are strains. So is it possible? But then songs and poetries and proverbs are what make a language what it is. And when UNESCO says that we are losing this language because there are so few speakers in this language, we mourn the passing of poetry and songs. With that, I come to you, Shantanu-ji. Please, I also request you, and I know you will do that, address other issues in translation that have not been brought to the fore. Thank you. Thank you, Madam. There is nothing much left to speak as a last speaker. I would like to convey big thanks to Dr. Rao for inviting me to this event. The caption of our discussion, that is, importance of reading translated works, can never be overemphasized. It has often been said that India is a translation zone. There is a saying in Hindi that our water changes every 30 miles and the language changes every 50 miles. So how do we know each other without translation? I can personally say that I have read Premchand from Hindi, you are Anantamurthy from Kannada, Vaikam Muhammad Bashir from Malayalam, Pannalal Patel from Gujarati, Navakanto Bodua from Assamese, Kalindi Charan Panigrahi from Odia, all through translations into either Bengali or English. And why Indian literature only? How could we have read Tolstoy, War and Peace, Dostoevsky's Crime and Punishment, Roma Rolla, Jean Christophe, Albert Camus, a stranger, outsider? If those were not translated into English and eventually in Bengali, we would have remained poorer in our knowledge of literature. Hence, reading translation is must for our mental and intellectual growth. Also, a discovery of newer world, newer thoughts, newer ideas depend largely on translation. I would only give two examples. Before the English-speaking West discovered and promoted the literature of Latin America, did we even know the name of Gabriel Garcia Marquez or Jorge Luis Borges? Now, 1,000 years of solitude is a household name among Indian readership. My second example is Africa. Only after English-speaking Westerners publishers discovered the rich literature of Africa in English translation, we got to know about Chinua Achebe and his Things Fall Apart, Ngugi wa Thiong'o, and other great African writers. So what I'm trying to tell you here, that expansion of our mental horizon largely depends on our access to good translation. What we know as the Northeast as a distinctive geographic territory, but the distance among the 7 sister states, including Sikkim, is quite substantial because a Khashi cannot read Manipuri, a Manipuri cannot read Mizo, a Mizo cannot read Assamese, and the Assamese cannot read Kokborok. However, in recent times, there
has developed some amount of proximity primarily through translations and the English writings, which is common language across the states. Also, I can refer to the epics, which become pan-Indian texts through translation in various forms. My sensibility as a translator was largely molded by my long association with the Sahitya Academy. As I got an opportunity today, I must acknowledge my gratitude to this great institution. Having worked as assistant editor, I dwelt with languages like Assamese, Manipuri, Nepali, Dogri, Rajasthani, English, and Bengali. I was involved in the number of translation activities and workshops, some bilingual, some multilingual. By conducting the workshops and assisting the resource persons and translators, my own interest in translation activity aroused. Initially, there are stray assignments from Sahitya Academy. Once my credentials as translator established, I started receiving commissioning from other publishers also. However, building the bridge between two linguistic communities should be the motto of a translator. When you read a translated text, you are reading two authors, that of the original and of the translation. And you will be reading some of the best writing from another language and culture. And a good translation is itself a work of art. Reading work in translation is the easiest, most entertaining way to explore a multiplicity of frameworks and approaches, to study a wide variety of writing rhythms and styles. Books from other places expand our literary universe in many ways. Thank you. Thank you so much, Shantanu ji. Your work has given you an insight. Absolutely. I mean, not just the time, you have left us with time for inviting if anybody has any questions. Otherwise, I also have questions for our erudite panelists. First and foremost, to the floor, anybody? Ajay ji या कोई और अगर कुछ पूछना चाहे, हमारे बीच बहुत सुलझे हुए राइटर्स हैं, और नहीं तो फिर मैं, अच्छा है। उदाहरण के लिए निराला की पंक्ति लेते हैं, धन्य में पिता निरर्थकता तेरे हित कहीं कर न सका। हाँ, तो इसका ये है कि निराला जिस सरोज स्मृति पर लिख रहे हैं, अपनी पुत्री पर कविता लिख रहे हैं, जिस भाव से, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक पुत्री के और समय देहांत होने के बाद जो उनके पास पीड़ा है, जो तकलीफ है, उसे शब्दों में उन्होंने ढाला है। अनुवादक उस भाव को कैसे अनुवादित कर सकता है, जिस भाव से कवि गुजर रहे हैं। मेरे से ये प्रश्न है, मैं उत्तर दूं इसका। देखिए, ये सबसे पहली बात है पोइट्री को अनुवाद करने के लिए कि पोइट्री वाला, पढ़ने वाला बंदा एक सेंसिटिव आदमी होना चाहिए टू रीड द पोइट्री। अनुवाद दूसरा पहलू है। पहला पहलू ये है कि आप उस पोइम को, गीत है, जो कुछ है, वो आप पढ़ो। पढ़ने के बाद मैं आपको एक रचना बताता हूँ, उसको फिर एक बीज की तरह अपने मन में बोलो। जो ही आप पोइम आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक वृक्ष उग गया है। उस बीज को अपने अंदर रख के आप उसका भी एक वृक्ष उगाओ। तो जब आप उस पोइम का सेंटिमेंट, जो उसकी आत्मा को अपने अंदर बोलोगे, तो एक उसका भी पेड़ निकल आएगा। और सिर्फ भाषा का अंतर होगा। दूसरी बात है, कई लोग ये कहते हैं कि अनुवाद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो मानव सोसाइटी है सारी दुनिया में है, उनका इमोशन एक जैसा है, उनका थिंकिंग वही है। कोई माँ के मरने पर हंसता नहीं है, कोई माशूक के सामने कभी वही सेंटिमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, एक कल्चर का डिफरेंस होता है, दूसरा लैंग्वेज का थोड़ा बहुत, क्योंकि हैबिट और हैबिटेट उसको बोलते हैं, वो उसके लिए हमको और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए पोइट्री का अनुवाद करना कोई
मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि पोइट्री का अनुवाद करना ज्यादा आसान है, बशर्ते कि आप वो बीज अपने अंदर बोलो और उसका वृक्ष बना। बहुत अच्छा बोला आपने। आप एक और करना चाहते थे? हाँ बोलिए। You want to speak in English and do you need a mic? Any whatever you are comfortable. Yeah. So मेरा question थोड़ा it's on a technical level because I'm trying to translate satire, especially गढ़वाली satire into English. Now the thing is with satire, original में तो हंसी आ रही है, लेकिन translation में in fact some people before me have tried to translate the same satire, but it's very bland. So I'm trying to हाँ उसको सही करने की कोशिश करो, लेकिन उसमें किस टाइप के सेंसिटिविटी को मेरे को हाँ जी। देखिए जो ये सटायर और जोक है, ये कहाँ से आता है? ये आता है अपने कल्चर से, अपने इथिक्स से, अपने क्या कहते हैं जिस माहौल में आप पले बड़े। वो माहौल जब हम दूसरी, मान लो हम अब कोई शेक्सपियर का नॉवल पढ़ो, वो हम उसको मिसप्रोनाउंस करके ह्यूमर निकालता है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान में हर कोई मिसप्रोनाउंस करता है, सो दैट नॉट अ ह्यूमर फॉर अस। तो आंसर माय पॉइंट, जब आप सटायर को ट्रांसलेट करो, उसको वो सेंसिटिविटी उस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज टोटली बेस्ड एंड एम्बेडेड इन कल्चरल इथॉस ऑफ दिस। तो कल्चरल, जिसको हम हैबिट और हैबिटेट कहते हैं, आप किस वातावरण में रहते हैं और क्या कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको कश्मीरी का उदाहरण दे दूं, त्राट पे तुम पर बिजली कड़के, क्या जब हमने किसी को गाली देनी हो, किसी को बड़ा हम बोलते हैं चपेये त्राट, तुम पर बिजली कड़के। लेकिन अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई बहुत सुंदर लड़की जाती है, शी इज लाइक ए लाइटनिंग, द सेम वर्ड बट यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट। सो ये टोटली डिफरेंट होगा, बिकॉज वहां हम कहते हैं लाइटनिंग मस्ट स्ट्राइक ऑन यू, वहां कहते हैं शी इज लाइक ए लाइटनिंग। सो ये कल्चरल इथॉस में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द पॉइंट, सटायर को ट्रांसलेट करना, कल्चरल इथॉस को लेकर करना पड़ेगा। ये तो मे आई ऐड टू दैट, बंगाली में शिवराम चक्रवर्ती बहुत ही पॉपुलर, बहुत जाने माने राइटर हैं, और वो बहुत पन्स यूज करते थे। He used a lot of pun, and again, like satire, pun is something that is very language specific. You know, it's very difficult for someone not very deep into the language to understand even the satire. The writer is making fun of something through the use of a word which has two totally different meanings. Definitely. So we come back and I will conclude with a couple of observations. One is that to translate, the other day Upamanyu Chatterjee, when he was giving his Samvatsar lecture, he said to translate, it is more important to have a greater grasp of the language into which you are translating, more than the mother language. This can be contested. Someone else said that, you know, we have to know our language more rather than translating. I think I agree with Upamanyu that unless we are able to convey what the author has said, and as Arvindji has already elucidated, that particularly in poetry, when we translate, we create. So it's a transcreation. Like a story, like Devdas, our friend Singhji spoke about Devdas, has been made into 17 versions of Devdas on film in different languages. Film itself is a different language. So when it is translated, they cannot remain totally loyal to the original. And now what is happening, a story like Kabuliwala, which Tagore wrote, and Tagore passed away in 41, that is before independence, it has been remade this year, last year, where Mithun Chakravarti plays Kabuliwala, and it is made in the same language, Bengali, but it is placed in 1965. So the context, the nuances of the other, the outsider, changes. And to conclude, what I have always felt, others have also
sort of said the same thing in so many different words. We as readers, हम आपको देख रहे हैं. We as translators, we are scanning your body. We are going under your skin. We are going into your flesh and your bloodstream and trying to bring out the emotion, what's going on into your mind, in your mind. So a translator, so far we used to think of translation as secondary. We don't know who has translated as much as, Saki, I was trying to find out. If, we came to know about this whole poetry. Then so many other writers from the Middle East, what we call West Asia, Sherazadi, the stories were all orally transmitted, but they are all based in real time, and it was carried by word by travelers who went on sea or on the Silk Route, which is why so many customs, local customs have got woven into these stories. A translator, when he tries to translate, he has to be loyal to the cultures rather than the words. Thank you. एक सवाल और है. Sure. जरा ऊंचा बोलिए. अच्छा डिस्कशन रहा इस. हेलो, हाँ, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन था. सभी जो है लर्नेड पर्सनालिटीज ने जो अपने अनुभव के बुनियाद पर जो रिमार्क्स और अपने जो पेपर्स पढ़े, बहुत ही ज़बरदस्त थे, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन इन सब में एक चीज़ जो मैंने मिस की वो ये कि आजकल आज के दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है. हर चीज़, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी की पोयम या मोदी जी की पोयम्स का, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्वालिटेटिवली सुपीरियर अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेश की जा रही हैं. तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को असेस करने की भी यहाँ ज़रूरत है. मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इस पर कहना चाहिए था. हालांकि ये ठीक है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो उस अंदाज में नहीं आ सकेंगे जैसा आप लोगों ने. एक शायर है जैसे फिराक, रघुपति फिराक ने जो कहा था, एक अपने जज्बात का इजहार किया था कि जरा विसाल के बाद आईना तो देखे दोस्त, जरा विसाल के बाद आईना तो देखे दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई. अब इस नोयत का जो है क्लासिक ये गज़ल का शेर है, इसका तर्जुमा हिंदी में या किसी और भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शायद नहीं किया जा सकता है. हाँ, ये एक हकीकत है. You have made your question pretty clear. Can we go to the answer now? जी. We can continue the conversation if anybody is interested outside the room also. Subsequently. नहीं, आप अपना आंसर दे दीजिएगा. That is called linguistic एक हम बैंक बनता है, जो भी आप लिखते हो फिर वो वर्ड्स वहां से चूज करता है तो करता है. तो वो ट्रांसलेशन पोइट्री में पॉसिबल नहीं है. इट कैन राइट द पर्पट, आप शराब पी लो, कि वो कहेगा यू ड्रिंक वाइन, लेकिन वो शायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप शायर. सो how machine translation works, अभी time कम है, I would have explained it with the example. What's the linguistic corpus उसको बोलते हैं. Computer gathers a linguistic corpus and then substitutes words from here. Poetry cannot be translated by that. Administrative work, scientific work, because they have a word corpus. वो उधर से उठा के इधर लाते हैं. तो artificial intelligence cannot do translation of poetry, especially ऐसी poetry जैसे आपने बोला, क्योंकि उसके पास वो word corpus नहीं होता है. Chair beautifully put the essence of the discussion by saying transcreation. Transcreation is a beautiful way to explain translation. और मुझे लगता है कि अनुवाद सरहदें पार कर आता है. और जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो एक गाना, हम कविता के ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब, we shall overcome. इतना सुंदर ट्रांसलेशन
चाहे अंग्रेजी में गाया जाए चाहे हिंदी में गाया जाए, दिल को लुभाता है। और भारत तो वैसे ही भाषाई विविधता का देश है और यहाँ पर हम 50 से अधिक भाषाओं का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, and this makes this discussion even more significant. Big thank you to the chair for keeping it so tight and on the track, and thank you all the speakers for your valuable insights. May I request you all to kindly come forward ahead of these tables and gather for a group picture. And with this, we conclude this session now today, and we shall assemble again here at 2:30 for our next session. Till then, take care.